नमस्कार आपण समस्त को यह भिडियो बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो में आप सहित कॉलोनियलिज्म मीनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्म्स नोट्स टी शेयर करी आ वीडियो आगे मुझे कहबी आप पीडीएफ नोट्स टी किपर भाव पाइपर। तो चलो स्टार्ट करवा। तो कॉलोनियलिज्म रिफर्स टू ए हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन व्हिच जो कौन कॉलोनियलिज्म कहले बुझा गोटे हिस्टोरिकल आउ पॉलिटिकल बा राजनीतिक फैक्टर जहाँकि कौन ना इन विच कंट्री और ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज एस्टाब्लिश एंड मेंटेन्स डोमिनेशन ओवर अदर रीजन्स और टेरिटोरीज जो थे कि निज जो किसी कंट्री था नेशन था जो मैंने कि अन्य कंट्री उपर डोमिनेशन को आधिपत्य को विस्तार करते रिजन सीमांत ऑफ्टन विथ द एम्स ऑफ एक्सप्लोटिंग द रिसोर्सेस तार कौन नेम एम थाए मेन थाए कौन इंटेंशन थाए जे कौन इकोनॉमिकली रिसोर्स को संबल को शोषण करवा लेबर मानक आ लैंड को दिस प्रैक्टिस हैज बीन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यहाँ कौन गोटे ह्यूमन हिस्ट्री गोटे सिग्निफिकेंट पार्ट गोटे अविच्छेद्य अंग कहीपर विथ वेरियस फॉर्म्स एंड मोटिवेशंस एंड इट हेल्प परफॉर्म एंड लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द colonized regions and their indigenous population। देखिए context तो context कौन ना colonialism has its roots in the expansion and exploitation of European powers during the 15th to 20th century। European countries such as Spanish, Portugal, France, Britain and the Netherlands enhanced of the process of exploitation and colonization is often referred to as the age of discovery। नेक्स्ट देखिए कौन ना फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म फॉर्म किपर भाव होती ना फास्ट देखा सेल्टर कॉलोनिज्म। तो सेल्टर कॉलोनिज्म कौन ना इन दिस फॉर्म यही फॉर्म रे कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइजर्स एस्टाब्लिश परमानेंट सेटलमेंट ये कौन परमानेंट सेटलमेंट करदे इन द कॉलोनाइज्ड टेरिटरी दे टाइपिकली इंटेंड टू रिप्लेस आवर कौन और outnumber the indigenous population। Example of shelter colonialism include the colonization of the America by Europe power and establishment of United States, Canada, Australia and New Zealand। कौन उदाहरण हम देखिले। तो फास्ट कौन सेल्टर कॉलोनिज्म तंग फास्ट परमानेंट सेटलमेंट नहीं होले जे हां हमें तो परमानेंट सेटलमेंट हो बोले। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लोटेटिव कॉलोनिज्म। तो एक्सप्लोटेटिव कॉलोनिज्म कौन ना इन दिस फॉर्म कॉलोनिज्म एही फॉर्म रे primarily seeks to extract resources from the colonized territory। The colonizers maintain control over economy, labor and resources upon the benefit of the colonizing country। तो colonizer माने जो थिले ताको निजरो colonizing country ପାଇଁ ସେମାନେ कौन कले ना सब इकोनॉमिक लेबर एंड रिसोर्स को सब एक्सप्लॉइट कले आ ताको बेनिफिट मते ताको निज देश को नहीं गले। द बेल्जियन कॉन्गो अंडर किंग लिपोर्ट इट्स रूल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोटेटिव। तो यार गोटे एग्जांपल थिला जे बेल्जियम जो किंग कॉन्गो किंग थिले से भाव कौन एक्सप्लोट होते एही रूल द्वारा कॉलोनिज्म वेयर रबर एंड एवरी एक्सट्रैक्शन लीड टू म्यूचुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन आ लोकल पॉपुलेशन कौन एक्सप्लोइट करछन शोषण करछन्ती। नेक्स्ट देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनिज्म कौन ना सम कॉलोनियल पावर एम टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कॉलोनाइज्ड regions without significant settlement। They impose their own legal and administrative system, often leaving indigenous rulers or leaders in place or puppets। माने कौन पपेट भाया निज कंट्रोल को नौकरी। इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म। तो आम इंडिया जो आम ब्रिटिश सरकार आसिले ताके आम शासन कले शासन कर आम शोषण कले आम इंडिया उदाहरण। नेक्स्ट देखिए नियो कॉलोनिज्म। तो नियो कॉलोनियलिज्म कौन ना इवन आफ्टर द फॉर्मल एंड कॉलोनियल रूल सम कंट्रीज कंटिन्यू टू एक्सर्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर फॉर्म कॉलोनीज। दिस इज ऑफ्टन अचीव थ्रू इकोनॉमिक डोमिनेशन कंट्रोल and political interference। It is a more subtle form of colonizing that resides in the modern world। नेक्स्ट देखिए कल्चरल कॉलोनिज्म। तो कल्चरल कॉलोनिज्म कौन ना इन एडिशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल colonial power often sought to impose their culture, language and beliefs on the colonized people। this can lead to exhaustion of indigenous culture and language। तो ये कौन है ना colonizers मैंने कौन कले ना निजर जो थिला कल्चर को जो देश शासन करते सेटा कौन इन्फ्लुएंस में प्रभावित कले। नेक्स्ट देखिबा
imperialism. The imperialism कौन ना while not identical to colonialism, imperialism involves extending a country's power and influence through a diplomatic force. Colonialism is one means by which imperialism is realized. नेक्स्ट देखिए कौन ना इनफॉर्मल एम्पायर. तो इनफॉर्मल एम्पायर कौन ना द टर्म describes a situation in which a powerful nation does not establish formal colonies but exerts significant influence and control over the politics and economy of the weaker states. The United States influence in various Latin America countries during the 20th century is an example of an informal empire. So it's important to note that colonialism had devastating consequences for indigenous population, including loss of land, cultural suppression, economic exploitations, and often violence and displacement. Many nations that were once colonized still grapple with the legacy of colonialism in terms of economic disparities, social divisions and cultural loss. तो थोड़े जे जार शिकार है से तार सब किसी हरैला कहले हम कहि परिबा. तो एथिला colonialism रो मीनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्म्स हम सब एग्जांपल दे बुझिले. जदि आपण नोट्सटी भल लागिछि जदि आपण टाइम कोन डाउनलोड करबा चाहंती ताल डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि से जॉइन हंतु आपण नोट्स को पाई पारे. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट रे हम डिस्कशन करबा डीकोलोनाइजेशन रो नेक्स्ट रे वीडियो आनिबी.